ओके गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हुआ कि मैं इतना बोल बोल के मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बट एनीवेज, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि डिसअपियर फॉर दिस 10 days एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करो गाइस, बिकॉज वंस यू डू दिस देन ही आपको जाके रिलैक्स होगा। तो बाद में आप जब एग्ज़ाम लिखने बैठोगे तो रिग्रेट करोगे, एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिग्रेट करें। तो इसलिए आप एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं, उसको फोकस करो। नहीं हो रहा है तो मेरे साथ आके मेरे साथ बैठ के पढ़ो। इट इज़ पॉसिबल कि आप पढ़ो जो मॉर्निंग 6 to 11 और इवनिंग 6 to 11 आप पढ़ो, बाकी का टाइम आप रिलैक्स कर सकते हो। तो अगर मॉर्निंग आपसे नहीं हो रहा है 6 to 11 पढ़ना, तो गाइस जस्ट फ़ोन खोलो और मेरा पॉडकास्ट सुनो, जहाँ पे मैं 6 to 11 का पॉडकास्ट करूँगी, जहाँ पे मैं एक डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करवाऊँगी। एंड उससे जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है सब कवर होंगे। सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किया था, जहाँ पे हमने दो फेसेस देखे थे, एक स्टीप फेस था और एक प्लेट्यू फेस था। उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा था। तो सिग्निफिकेंस हमने ये देखा कि जो स्टीप फेस है उसमें ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो रहा है और वो हमारे टिश्यूज़ को सप्लाई करेगा। एंड अगर वो शिफ्ट राइट को होता है तो हमने देखा था कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगा। और प्लेट्यू फेस में हमने देखा था कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ये एक सेफ्टी फैक्टर है। लेकिन फ़र्क जब पड़ता है जब आप जब वो नॉर्मल नहीं है, हाई एल्टीट्यूड पे है या उसको कुछ लंग्स प्रॉब्लम है, तो वो टाइम पे फ़र्क पड़ता है। ऑक्सीजन कंटेंट जो है नहीं बढ़ता, हाइपर वेंटिलेशन दे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 100% हाइपर वेंटिलेशन देना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन। सो एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने इतने सारे सेशंस कंडक्ट किए कि अब मेरा सिस्टम बोल रहा है कि नहीं, अब मुझसे बोलना नहीं होगा। तो फिर भी मैं अपना जो 10 आवर्स डेली पॉडकास्ट मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स कंप्लीट करना चाहूँगी। Factors affecting affinity of hemoglobin binding with oxygen. So several factors influence the affinity of hemoglobin with oxygen. जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर, arterial partial pressure of carbon dioxide, arterial pH and 2,3 dpg. So several factors influence the affinity of hemoglobin for oxygen. The important factors are temperature, arterial partial pressure of carbon dioxide, arterial pH and the 2,3 dpg. A rise in partial pressure of carbon dioxide, a fall in pH and a rise in temperature all shift the curve to the right. अगर आपका कर्व राइट पे शिफ्ट होने वाला होता है तो वहाँ पे pH कम हो जाता है, H+ बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपका जो कर्व है वो राइट में शिफ्ट होता है। एडवांटेजेस ऑफ शिफ्ट टू राइट, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन मिलेगा टिश्यूज़ को। सो शिफ्ट ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इक्विलिब्रियम कर्व टू द राइट इज़ physiologically advantageous to the tissue at the tissue level, as affinity of oxygen for hemoglobin is lowered. A rightward shift enhances the unloading of oxygen for a given partial pressure of oxygen in the tissues. A leftward shift increases the affinity of hemoglobin for oxygen, thereby lowering the ability to release oxygen to the tissues. राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? enhances the unloading of oxygen for a given partial pressure of oxygen in the tissues. तो guys, one more thing I want to mention is जो आप स्ट्रगल करोगे ना, बस एक 10 दिन स्ट्रगल कर लोगे एंड ये 10 दिन स्ट्रगल करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना गाइस, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। अभी रगड़ के घस के पढ़ लो एंड बाद में यू आर गोइंग टू गेट फ्रूट्स ऑफ इट, फ्लाइंग कलर्स। ओके,
शिफ्ट टू राइट इज़ हेल्पफुल इन एक्सरसाइज. अपना सब अपनी जान लगा दो, हर सेकेंड को यूटिलाइज़ करो, हर सेकेंड रिवाइज़ करो, टॉपिक्स को एक्टिवली रिवाइज़ करो एंड इसका फल ज़रूर मिलेगा. इफ़ यू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, इफ़ यू यूटिलाइज एवरी सेकेंड, देन यू विल गेट इट. Shift to right is helpful in exercise. The functional importance of the shift is that an exercising muscle is warm and acidic and produces large amount of carbon dioxide. High carbon dioxide partial pressure will be there then. So all these factors favor the unloading of more oxygen to metabolically active muscles. Temperature. Increase in temperature shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve to right, and decrease in temperature shifts the curve to the left. Increase in temperature shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right, and decrease in temperature shifts the curve to the left. Increase in temperature to the right tissues के पास, and decrease in temperature to the left. In other words, high temperature decreases the affinity of hemoglobin for oxygen. This helps in release of oxygen in metabolically active tissue in which temperature is more. Alteration in blood pH shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve. According to Christian Bear and Neil Bohr in 1904, demonstrated the respiratory acidosis shifts oxygen hemoglobin dissociation curve to right. Since then, the decrease in oxygen affinity for hemoglobin acidosis is known as Bohr effect. A decrease in pH shifts the curve to the right, and increase in pH shifts the curve to the left. When blood passes through capillaries, carbon dioxide enters red cells that decrease intracellular pH and shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve to right. Under normal physiological conditions, binding of about 0.7 mole of H plus causes Hp to release 1 mole of oxygen. So alteration of blood pH shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve. सो आपके पास डिफरेंट मेथड्स है पढ़ने के. आप मेरे ऑडियो सुन के पढ़ सकते हो, या खुद टेक्स्ट बुक लेके पढ़ सकते हो, या कोई PDF से पढ़ सकते हो, या कोई वन शॉट लेक्चर देख सकते हो. तो किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो. बस पढ़ने का जुनून होना चाहिए. अभी जो घस के आप पढ़ोगे ना, सच में इट्स गोइंग टू वर्थ इट थ्रू आउट योर लाइफ. आपने गलती की थी अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज ही नहीं मिला, प्राइवेट में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अभी पढ़ लो. Alteration in blood pH shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve. Christine Bohr and Neil Bohr 1904 demonstrated the respiratory acidosis shifts oxygen hemoglobin dissociation curve to right. So then the decrease in oxygen affinity for hemoglobin acidosis is known as Bohr effect. Decrease in pH shifts the curve to right, and increase in pH shifts the curve to left. When blood passes through capillaries, carbon dioxide enters red cells that decrease intracellular pH and shifts the oxygen hemoglobin curve to the right. Under normal physiological conditions, binding of about 0.7 moles of H plus causes hemoglobin to release 1 mole of oxygen. So curves आप बनाना सीख लो गाइस. ये S शेप सिग्मोइड कर्व है. 10 से 60 तक कर्व का बढ़ेगा, स्टीपर होगा, और उसके बाद प्लेट्यू फेस जो कांस्टेंट हो जाएगा. एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेना है, और वाई एक्सिस पे आपको हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लेना है विथ ऑक्सीजन, percentage of saturation of hemoglobin with oxygen. Thus, when blood passes through tissue capillaries, an acidic environment facilitates the release of oxygen from hemoglobin into the tissues. So, effect of temperature on oxygen hemoglobin dissociation curve. Decreased temperature shifts the curve to the left. Decreased temperature shifts the curve to the left, and increase in temperature shifts to the right. They promotes oxygen release into tissues during exercise. During increased skeletal muscle temperature facilitates oxygen delivery to exercising muscle.
Thus, when blood passes through tissue capillaries, the acidic environment facilitates release of oxygen from hemoglobin to the tissues. Carbon dioxide. During cellular metabolism, carbon dioxide is released into the circulation that increases generation of H plus and decreases pH. This shifts the curve to the right. This results in release of oxygen from hemoglobin. The shift to right is acidosis. Bohr effect is partly due to effect of decrease in pH and partly to the direct effect of carbon dioxide and hemoglobin. Carbon dioxide combines with unprotonated amino groups of hemoglobin Hb and H2 to form carbamino groups. Effect of pH on oxygen hemoglobin dissociation curve. Decreased pH shifts the curve to the right and increased pH shifts the curve to the left. During exercise, metabolic acidosis in the tissues facilitates oxygen delivery to the active skeletal muscle. So if decreased pH, then to the right, increased pH to the left. The formation of carbamino group causes negative shift in the charge on one amino acid side chain that changes the conformation of hemoglobin. This results in decrease in oxygen affinity of hemoglobin. In metabolically active tissues, metabolic vasodilation increases blood flow to the tissues, increasing the oxygen transport to the area. In the area already persisting local hypercapnia and acidosis shift the curve to the right and decrease oxygen affinity for hemoglobin that facilitates oxygen delivery to the tissues. Okay, fine. We'll discuss later.